So recording shall start. Okay. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Asfandyar is our MS student. Today his final defense is external examiner is Dr. Nadesh and internal examiner is Dr. Irfan. Please start with the presentation. Let's F5. Any others? So the topic of my presentation is automatic scientific literature gathering and analysis from textual corpus using web scraping and locality sensitive hashing. What this means is that the extraction of the research articles by using the web scraping and then the analysis of those extracted research articles is done by the locality sensitive hashing technique. So the outline is the introduction, the literature review, proposed methodology, results and discussions, conclusions and references. So in the introduction, researchers often face many problems to publish and present their research work to scientific journals, conferences and seminars. The acquisition and analysis of research articles by a researcher involves the painstaking efforts to keep up to the pace with the ever-increasing body of the knowledge. The academic and most broadly said repeatedly the textual corpus for the scientific literature gathering. The scientific literature is basically the research articles that academicians search by giving their keywords into the web repositories to get their required literature. Now, the literature review of the past research articles, that the findings and everything, focused on various aspects as I should tell you that there are 38 research papers are cited in this study. So I have just listed a few of them to just show the recent work. So focus on the various aspects of web scraping, beginning with the basic introduction and brief discussion on various software tools of web scraping. So from 1 to 4 research paper, they have discussed the web scraping, the introduction, the briefing, the softwares and tools they use for the web scraping and the techniques. Attempted to set up an interface that would use web scraping techniques and Python modules to link a researcher list of publications present on Google Scholar. In the second paper, what they have done, they have attempted to integrate the web scraping techniques with the Python modules in order to link a research list of publications to present on Google Scholar. Revisited, explored and discussed some information extraction techniques on web like web usage mining, web scraping and semantic annotation for a better or efficient information extraction. Focus on showing how straightforward it was to set up a data scraping pipeline. The data scraping pipeline is basically the item pipeline that is in the web scraping in the settings.py file. This is basically when we are scraping the data goes into the items pipeline from the scheduler to the pipeline. There are 5 components, I will discuss it. Discussed a few of the data mining techniques, algorithms and some of the organizations which have adopted the mining technology to improve their businesses. Then discussed the challenges and strategies to programmatically access such data in standard web repositories. These were some of the recent research papers, the recent studies according to my work. Now the problem statement. When researchers visit different research repositories to find related work using their keywords, a large number of data is produced. A large data is produced and an amount of scientific literature. Selecting few of the related articles from 1,000 research paper is a very tedious job. Research question. Can a crawler extract data from entire website? Yes, but we have to keep our crawler updated. If we will not keep our crawler updated, we will not be able to extract the data. Can a crawler extract the data from Ajax enabled sites too? Yes, our crawler can extract the Ajax enabled sites, just like Airbnb. Airbnb contains React, Redux and Ajax, and we have also extracted the Ajax enabled sites, the Airbnb. Now the objective. To study, automatic collect and analyze scientific literature from web repositories such as Google Scholar using web scraping techniques and select the most relevant research papers. The web scraping techniques was used by the past research papers too, but they didn't briefly told about it. Now, transform the unstructured data from the web into the structured format and support the scraping of HTTPS sites plus the Ajax enabled sites too, to identify the best web practices to follow without being blocked by the various security mechanisms. And in the last, to study
the application of locality sensitive hashing to text similarity algorithm to select the desired number of relevant research papers. Now, the proposed methodology. So, we have used the Scrappy shell for testing the Scrapper code. I will first of all read it, then I will explain one by one. We have used the Scrappy framework for the crawler to run and execute the Spider and extract the APIs. We have used the Splash with the Scrappy for Spider to start crawling the targeted website for extraction. We provoke the server to ban us so we can see exactly what the response sent back by the server looks like. Okay, now one by one. So, we have used the Scrappy shell for testing the Scrappy code. Scrappy shell is basically a tester for the scrapper. Like we have to write something code, but we will not directly implement it to the server. We have to first of all write our code into the Scrappy shell and it will test it. For testing, Scrappy shell will check the XPath expression and the CSS selectors of a website. Now what is an XPath expression? XPath expression is basically the skeleton of a website. And the skeleton of a website is basically the HTML. So what we are going to do when we are going to execute our code or execute our crawler, the crawler will basically go to the XPath expressions by going through the head path, then the H1 tag. How the computer will do this? Yes, sir. Do you have some algorithm for this? Sir, for the scrapper, there is no fixed algorithm. It You changes. have used these steps. Have you some simulation or a model? Yes, sir. In presentation I have written, and there is also proof in the proposed solution. Yes, sir. So, yeah. So you don't have to go to the CSS selectors because we first of all we want the skeleton on the website. So it will check one by one that what kind of data is present in the head path, what kind of data is present in the paragraph tag, p tag, and what kind of data is present in the footer. After that, we have used the Scrappy framework for the crawler to run and execute the Spider and extract the APIs. Now, why are we using Scrappy framework? Because Scrappy framework is very easy to use from the start if you are using the Scrappy shell. If you are using Scrappy shell, you must use the Scrappy framework to go with it. Now, what the Scrappy does is it will extract the APIs from the spider and the extractor server. Now, what does API does? API is the communication between the server, the website you are about to attack, and the system from which the crawler will begin. So, we will first target the APIs. Once we extract the APIs and get all the information that when we will attack the server, what kind of information we will get. So, the Scrappy shell does that. In this, we will test the code, we will execute it, and we will use the Scrappy framework with it to extract the APIs. We will get the required information that what kind of path we will take, what kind of technique we will take to crawl all the data. Now we have used a Splash with the Scrappy for Spider to start crawling the targeted website for extraction. Now what is Splash? Splash is basically a lightweight browser. This is not any kind of browser. You can't use this browser like the icons or anything. You have to write your code or Scrappy shell's code or what kind of code you are writing in it. But you have to keep in mind that robot.txt file should be there. Now robot.txt file is present in every website. It basically allows or disallows you the things you can do with it or do not with it. It is basically done by the administrator to avoid the scrapping or the crawling. Now, what we did then after we did that, we provoked the server to ban us so we can see exactly what was the response sent back by the server. Right? We provoked the server. We didn't do any precaution, we didn't use any technique. We just hit the website first to see what kind of response we can get. So, What kind of response we get? When we hit the website, it gives us an error of 429. Okay, there is also an error 504, but there is also an error of 429. The 429 is basically the request we have sent to the website, the concurrent website. Every website has a limited request. If we accelerate, we will get banned, temporarily banned, and a permanent ban. For the temporary ban, if you have a static IP, then you can just use a proxy, Crawlerella. It is not free, but you can use it. And for the dynamic IP, you can just restart your router and then start crawling your server. Okay. Now here is it, the Splash. So
this is a slash. Okay, this is a light browser in which you can see that there is a line system. There is also a Python module. There is a Minecraft. There is an Opera symbols. There is a lot of there is a Firefox. There is a MySQL. So what is happening in this? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है Yes, sir. मुझे तो नजर नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है Sir, मैं तो इसको बहुत पढ़ी हूँ। Okay. So we have used for the proposed methodology. We have used the spider identification technique in order to make our crawler more efficient. We have limited the request by using rate limit technique for not getting banned while hitting the website for pagination. We adjusted the values with the start position keys that were changing while crawler was hitting the website for pagination. We connected the VS Code with Rapid Miner by using the connect extension in order to analyze the similarity between abstracted articles. Now, number one, we have used the spider identification technique in order to make our crawler efficient. What does that mean? Spider identification is done through a spider identification is done through the user agent. User agent is basically the amount of spiders we create. In our work, we created seven spiders to crawl the research articles from the Google Scholar because it is a very restricted website. You can't scrap that easily. So what happens is that when you define 7 or 6 user agents, you make a scrapper and then you start hitting the website. When you hit the website, it can again gives you the error. First scrapper is gone. Then the second scrapper again is hit. Now what will happen is that when it gives you a permanent block, now it gives you a permanent block. All your 7 user agents are giving you a permanent block. Now what you're going to do that you're going to give a download delay variable and set its value to 5. What will happen is that your spider will look like a human, but it will have its own speed. I might tell you that Scrappy can scrap 960 pages per minute if you have a 8 gigs of RAM and 4 cores of CPU. If you have 2 cores of CPU and 4 gigs of RAM, you can't scrap it. It will take like 8 to 10 and 12 days to even scrap it, or even it might give you an error, or your CPU usage might go high, which may damage your motherboard. So in that case, you have to give the variable to the download delay variable of 5. What will happen that each spider and after each request, a 5 seconds of delay will be added. What will happen that you will get the data, but from time to time you will be getting notice. Okay. So after that, when you do that, you have to limit the rate request by using the rate limit technique. Now what that means? It then gives you a 4 to 9 error. Okay, there are a lot of errors. 4 to 9 error, 200 error. When it gives you this error, so after that the rate limit, you have to enable the HTTP caching. What happens at the first spider or the first 3 or 2 spiders which have attacked the server, what will the rate limit the HTTP can ever do? When the 4th or 5th spider will go, they will check the memory first. They will check the memory of the first 3 or 2 spiders, then how much data they have gathered. Then they will continue from there. And give you the accurate result that this much data has been executed, now we are executing this much. But again, if you have an 8 gigs of RAM, then this process can be done. Otherwise, this will cause a lot of damage, as it is already caused a lot of damage in our system. So we adjusted the values with the start position keys that were changing while crawler was hitting the website for the pagination. Now what are the start position keys? Start position keys start from the pagination, that 1, 2, 3, the basic number we set. So in my case, the position keys were 12, then 10, then it went to 24. Now what will happen is that all the spiders in the line will check that whether the position key is according to the crawler or not. Now the crawler basically is going to give us the 504 error in that because it will crash at the point of pagination. It will crash at the point of pagination. So what are we going to do in that situation? Well, we have to give a Python code that is the try and except block. In the try statement, we have to tell the user agent that you have to
choice. You have to choose which user agent you want and which and from which user agent you want to scrap the website. Okay. If, for example, if the first user agent and the second user page, then give us the error that the code don't match the data. That's it. Then after that, we will then after that what we will do is that we will start to execute. We will going back to the splash and we will activate the Docker CLI. What that will do, that we will take our code of the start position keys and make a variable. You create a variable that will do this. I will say that after that we will connect the VS Code with the rapid miner by using connect extension in order to analyze similarity extract articles. I will show you. There. So there is the start position key. This is the start position key of the first page. Okay. So everything what I have told you till now is only the extraction of the first page. If we extract a number of pages, we have to look for this. So in this case, we have to write the code, or we have to create a variable that is create, and which is gonna what is gonna do? It's going to get us the D key and the result key. What are these going to do? The result key is going to give us all the pagination and all the information in a type of list, and then it will tell the user agent that what kind of information you want to extract, whether that is the author, whether that is the full research articles, whether that is so. Then we have to write according to it. Like here it is 12, we have to go back, okay, and then we have to again go to the download delay variable. Like the download delay variable was for this. Okay, position key was 12. I'm a bit confused because what you are saying we have forgotten everything. So do you have a systematic diagram? What you speak that is available over there? No sir, this is not like this. This was a practical work, so it was done like that. It was really tough also for me. इस सारे काम को किसी एक डायग्राम में It is impossible, sir, to tell everything in this one diagram because everything is a separate portion, sir. जरा से पूरा जल्दी जल्दी बता Oh, okay, sir. Like I'll make it simple. If this is the position key for 12, okay, so we have to go back. So there for this the position key, the HTTP enable was 5 seconds of delay. We have download delay. So when this is 24, we will add 3 seconds of delay, and we will have to check the HTTP cache. After that, we have to check our IP too. Is it changing? Is it getting blocked? If you have a static IP, then you have to buy, like I said, you have to buy a paid proxy. And if you have a dynamic IP, then it's okay. You can just, like, that is also a lot of work. You will restart your router, and this work will be restarted again. Okay. So after connecting the research articles, like after we got the research article and data.json file, which I will show you now right now in the results. So we connected the VS Code in 2019. We connected the VS Code with the rapid miner. What it did, that it gave us the similarity of all the research papers that were close to each other. So this is the rapid miner model. When you connect the rapid miner, right now rapid miner model is at 30 days trial. It's paid now. But in 2019 and 20 it was free, and it was with the VS Code. And the VS Code is a really best tool and a really best IDE. Why? Because you can use a different kind of extensions. You can even use the Python extensions, and even if you are a great developer and you can even make your own extension, you can contact the support system of the IDEs of the Visual Studio Code, and you can give your extension and they can use it in their IDEs. So by doing all that process, then we got the executed the position similarity, the similarity between the text. We got all the research articles in the data.json file. This process is then executed back to the VS Code. Back to the VS Code, where we have executed all our code, and we have executed the 504 error, and we have done everything. So it will go back and all the details. रैपिड माइनर का तो अपना यूजर इंटरफेस मौजूद है, तो उसको फिर VS कोड के साथ कनेक्ट करने की क्या जरूरत है? सर क्योंकि जो इसका काम था सर, ये तो जो है बहुत ज़्यादा था, तो ये इसके साथ जो ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल था, इसका ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल था स्क्रैपर के साथ,
तो अभी जो वेब स्क्रैपर है वो अलहदा कर दिया इन्होंने, और जो टेक्स्ट सिमिलैरिटी का एल्गोरिथम वो अलहदा कर दिया। 2019 और 2020 में अगर आप पुराना उसमें देखेंगे तो एक्सटेंशन जो है वो उसके अंदर रैपिड माइनर की थी। तो वो जब आप कनेक्ट करते थे तो वो सर्वर के पे जाता था और आपको उसमें अपना पोर्ट देना पड़ता था। तो पोर्ट था हमारे 8050 8050 एंड 8050, जो कि स्क्रैपिंग हब के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता था। स्क्रैपिंग हब जो है वो क्लाउड सर्वर है स्क्रैपिंग के लिए, जहाँ पे जो है हम अपने स्क्रैपर जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप सिंपल अगर कोई स्क्रैपर अपना डिप्लॉय करना चाहते हो, कोई स्पाइडर जो एक स्पेसिफिक छोटी सी वेबसाइट के लिए, तो आप डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मुझसे तो उधर से अगर कोई डेटा चाहिए, आप वहाँ से डिप्लॉय करके सिर्फ चेक करते हो कि हाँ काम कर रहे हो, तो फिर वापस आते हो, तो उसके लिए फिर आप डॉकर CLI यूज़ करोगे। डॉकर CLI में आप फिर कमांड दोगे कि रन कमांड xi स्क्रैपिंग स्लैश हब स्लैश 8050 जो कि मेरा पोर्ट नंबर था, which is my port number. What is your port number will be, you will execute it in the Docker shell. You have to use the kinematic and you have to use the Docker CLI. Without that you can't use Flash and you can't execute all the algorithm. Okay. So this was the execution of the spider. We got all the executions and you can see that there was no error. There was no error. There was robot.txt file everywhere. See there, the second line is about the robot.txt. You have to obey the rules. Like if you want to scrap the website, if it's not allowing you, then you have to use robot.txt file force. You have to set it value to force. And then again you have to go back to HTTP, memory, all that kind of stuff. Okay? You can see that there is a redirect and cookies and the HTTP proxy. See the HTTP proxy dot proxy. This is what I am talking about. You have to use a big proxy if you have to do it. अब स्क्रैपिंग वाले पार्ट की तरफ जल्दी आगे चलें। स्क्रैपिंग वाले सारे पार्ट Yes, the data received from the execution of spider. Now, स्क्रैपिंग वाले पार्ट को यही है सर, स्किप कर skip कर दो। स्क्रैपिंग वाले सारे पार्ट को स्किप कर। Okay. LHS पे आ गए। Yes sir. ये डेटा दिया था इसने। Okay sir. So, in the rapid manner, सर वो तो मुझे दोबारा फिर से साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मुझे डेटा दे दिया था लेकिन डेटा आ गया बस ये फायदा नहीं है। Okay sir. So sir, we got the titles, research papers 1, 2, 3, 4, 5, 5 papers in 5 different papers, and these are the similarities. You can see that they have given us the similarities by using these techniques, by using the user agents, and this data. Let me tell you, we ये आप जरा 2 पे इधर लिखिए सिमिलरिटी 0.6 कैसे आ रही है, इसी का नाम देख लें। ये हमने देखे जब यूजर एजेंट जो हमने यूज किया था सर, ये यूजर एजेंट जो है जब हमने यूज किया था हमारे 7 स्पाइडर्स थे, उसमें से 5 हमारे एक्सपायर हो गए, तो जो हमारा पूरा डेटा था वो हमें 2 स्पाइडर्स में लाके दे दिया। तो ये देखिए यूज कॉन्करेंट रिक्वेस्ट भी देखें 12 थे स्कीम के अंदर, फिर देखें इसके अंदर यूजर फॉर आर्टिकल यूजर एजेंट देखें 4 to 9 रिक्वेस्ट। तो जो डेटा था सर, जो रैपिड माइनर है, रैपिड माइनर में जो है वो आपको 2 तरीके का डेटा वो आपको देता है। एक डेटा जो है वो आपको इस तरह का देता है और एक डेटा वो आपको इस तरह कहता है। अभी जो आप जो टेक्स्ट सिमिलैरिटी करेंगे, मैंने आपको कहा ना कि ये 2019 में और 2020 में VS कोड में इसकी अपनी एक्सटेंशन थी, रैपिड माइनर की अपनी एक्सटेंशन थी, आप उसको और फ्री था ये, इसको अभी पेड है, ये फ्री था। तो इसमें यह था कि आप एल्गोरिथम्स को एक्सट्रैक्ट करके या अपने काम को एक्सट्रैक्ट करके उसको आप रैपिड माइनर के साथ या किसी और चीज़ के साथ आप उसको कनेक्ट तो आप करके कह रहे हैं कि लोकल सेंसिटिविटी हैशिंग जो है उसके अंदर पहले बिल्ट थी, आपने वो यूज की। यस सर, इसके अंदर अपनी थी सर। रैपिड माइनर के अंदर उसका एल्गोरिथम बिल्ट आपको नहीं पता एल्गोरिथम कैसे काम करता है? नहीं सर, मुझे सारे ये स्क्रैपिंग वगैरह इसका पता है सर, एवरीथिंग सर। एल्गोरिथम का नहीं पता सर एल्गोरिथम के बारे में स्टडी किया है सर इसका। लोकल सेंसिटिविटी हैशिंग का सर आपने पूछा था ये सिमिलरिटी कैसे आई है, आपने बताया था लोकल सेंसिटिविटी हैशिंग से आई है, वो किस तरह होती है वो बताना था, आपने वो बता
स्क्रैपर दिखाने शुरू कर दें। अच्छा लोकेलिटी देखें, सेंसिटिव हैशिंग आपने देखें सारा काम कर लिया। वहाँ से बताओ उसको देख के। मैं आपको बताता हूँ। ये 8 आर्टिकल्स थे, ठीक है। आपका काम क्या था कि इनमें से आपने सिमिलैरिटी निकालनी है, लेकिन सबसे पहले काम क्या है कि इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। वो कर लिए, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर जब एक काम देखें इतना आसान तरीके से हुआ है, अब आपको जो है VS कोड आइडियली जो है वो आपको ऑलरेडी एक एक्सटेंशन दे रहा है, आपको ऑलरेडी एक एक्सटेंशन दे रहा है। तो अब आप उसको सिर्फ बताओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए उसमें, आप उसमें बताओ, हमारी आसानी के लिए। तो आपने क्या बताया, बताओ। नहीं सर, उसने आपको बता दी ये सिमिलैरिटी वो आपने नहीं। क्या असल बताया? में कंफ्यूजन जो है कंटिन्यूअसली वहीं पर आ रहा है कि आप बोल रहे हो बट देयर इज नो सिस्टमैटिक मॉडल दैट यू हैव अडॉप्टेड from where an input is coming, what is the processing technique, Sir, how these are working, and lines are written over there, सर ये इतना ही and you टफ है speak continuously. सर, सच में ये इतना ही टफ है, ये मुझे भी इसमें सर अगर बात करो तो मैं बना के दे दूं इनका वो तो मैं भी बना लूंगा, लेकिन होना बना ये लिया चाहिए कि आप अपना एल्गोरिथम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं देते, इट इज इन अ सिस्टमैटिक वे। सर इसका कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं है सर, नहीं स्क्रैपर का हो नहीं सकता। एल्गोरिथम छोड़ देना, आप स्टेप्स लेते हैं। ये सबसे पहले मैंने ये किया, डेटा फ्लो मॉडल आपने बनाना होता है, इसका मेथोडोलॉजी आपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है। सर रिसर्च में मुझे नजर नहीं है इसमें। नहीं सर, सर आप कौन सी मेथोडोलॉजी, मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये दोनों नहीं है सर। एक स्क्रैपर जो है वो कभी ना क्वांटिटेटिव यूज करता है और ना क्वालिटेटिव यूज करता है, वो 504 मेथोडोलॉजी यूज करेगा। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल है, देन आज टू द सर असल में ये थीसिस के अंदर भी इन्होंने यही हरकत की हुई है। मैं काफ़ी पहले पढ़ा हुआ वो चिट्टे में यही तस्वीरें, स्क्रैपर भी जो है तो उसको चला के उसी की जो है तो मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे इनपुट आउटपुट की दिखा के, कोई मतलब उसमें वो चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा भी है पर शायद उनको समझ नहीं है, लेकिन सर सारे पूरा थीसिस सब तस्वीरों में से बैठे मुकम्मल करें वो मैं सोच रहे हैं, ठीक है आप कंटिन्यू करें, ठीक है मुकम्मल कर लेते हैं बात करते हैं। करो बात। तो ये भी समझ जाती है कि सर क्या कह रहे हैं। सर आप दोनों को मैं वाकई में मैं और एक घंटा लगा लूँगा, मैं इस पर बैठ के आप लोगों को तफसील से समझा सकता हूँ चीज़ें। यार हम तो ऐसी ये कोई बात नहीं है। We are sitting over here ठीक है to सर। listen to you. After that you will have your own. आप we ये have our पूरे own. के अंदर में 2-3 स्टेप्स हैं, ठीक है। एक है बीच में एक स्क्रैपर कौन सा बनाते हैं, उसको एक प्रोसेस बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है लोकल हैशिंग को जो है तो उसका एक स्टेप बनाते हैं। फिर उससे पहले जो है वेबसाइट्स की जो है कुछ इस तरह बना रहे हैं, तो डायग्राम किस तरह बनती है। नहीं आपको एक बात बताऊँ सर, Process. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोसेस फ्लो नहीं यार आप देखो सवाल कॉम्प्लिकेटेड सुनो। होगा, हमारे लिए नहीं है। MS की डिग्री ले रहे हो 80 years की, तो कॉम्प्लिकेट नहीं है तो हम आपको FA की डिग्री तो नहीं दे रहे। We are awarding you an 18-year degree. यस सर। आप सवाल सुनो, आप सवाल सुनो, सवाल का जवाब दो। ये मत कहो कि कॉम्प्लिकेट। अगर आपके कभी किसी लेमैन को अपना प्रोसेस समझाना होगा जी सर। तो आप कैसे समझाते हैं? कैसे? लेमैन पता है कौन होता है? जो आम आदमी है। तो आम आदमी को टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी ना सर। जी ये आम आदमी के लिए उसको आप नहीं समझाएंगे, आपने क्या किया? वो पहले- आसान अल्फाज में समझाओ। We are ordinary people. अच्छा तो फिर मैं There are the evaluators. ठीक We है। don't know about this. So the teacher is saying, how will you? अगर आपसे किसी जो है आपके घर में कोई मामू कोई चाचा जो आप है पूछे बच्चे आपका जो है सारा प्रोसेस उसकी कोई तस्वीर कोई डायग्राम बना के तो वो करता है किस तरह, तो आप किस तरह समझाएंगे? उसको पहले सर स्टडी करनी पड़ेगी, इसका काम ही यही है, पहले उसको इसको पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा सर। वो आपसे कहते हैं तुमने रिसर्च की है, मुझे 2 अल्फाज में बताओ कि तुमने क्या किया। आपके मामू को ठीक है ना जी। और बेसिकली डायग्राम की बात हो रही थी कि वो मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम कोई हो कि मतलब इसमें क्या हो रहा है। नहीं, नहीं है सर। दिस इज नो डायग्राम। है सर सारी डायग्राम। दिखाएं मुझे। कौन सी डायग्राम सर दिखाएं? जिसमें वो शुरू में आपके प्रोसेस फ्लो फ्लो प्रोसेस फ्लो बता रहे हैं। वो जो छोटी सी डायग्राम जो बदल गई है, वो उसी के सर इसको मैंने कहा कि वो डायग्राम इधर इसको काम नहीं ये एक्सप्लेन करूँ सर, ये एक लो।
जो नजर नहीं आ रहा हाँ ये एक्सप्लेन करते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है इट्स नॉट विजिबल। वो कलर वाला प्रिंट कहाँ है? वो कलर वाला मेरे पास है। वो नहीं है, छुपा के रखो। वो थी इधर प्रेजेंटेशन में क्यों डाला? वो छुपा के रखो। उसके खर्चा खर्चा नहीं हो सकता किसी को। नहीं प्रेजेंटेशन में डाल के कौन सा खर्चा? नहीं सर मैं ऑलरेडी मुझे पता था इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो वो आपसे मांग रहे हैं। बस उधर भी समझाओ, वो तो तुम्हारे पास है। बस ये डायग्राम इसी बता दो। इस डायग्राम में मैंने कहा है कि ये इधर तक इसमें कॉपी कर मेरे को नजर नहीं आ रहा है, पावर पॉइंट में दोबारा बना तो तेरे बागी नहीं है। सर ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। चलो एक्सप्लेन कर दो ना ब्रीफली। ओके, एक briefly। मिनट में इस डायग्राम में चलिए मैं आपको कौन सा ब्रीफ कर ये इसके अंदर ये 6 साइडों वाली ये चीज है। 6 अच्छा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें ओके सबसे पहले ऊपर जो ये क्लाउड आपको दिख रहा है ये इंटरनेट है, यहाँ पे जो गूगल स्कॉलर की वेब रिपोजिटरी है। इधर क्या होगा कि यहाँ पे जो है डाउनलोडर के पास पहले ये आएगा, ठीक है। स्क्रैपर आपने लॉन्च कर दिया, स्क्रैपर से डायरेक्ट जो है वो रिस्पॉन्स देगा डाउनलोडर को। अच्छा मुझे एक चीज आपके साथ ये मेंशन करनी, क्या चीज डाउनलोड कर रहे हैं? रिसर्च आर्टिकल्स। उसको कैसे पता लगेगा कौन से रिसर्च? आप स्पाइडर को बताओगे कि मेरे पास जो है 7 यूज़र एजेंट्स हैं। स्पाइडर के पास जाएंगे कि पहले सीधा पहले आप स्पाइडर के पास जाओगे, लेकिन डाउनलोडर पे तो आप क्लिक करोगे कि कोई रिक्वेस्ट पॉपअप हो जाए। नहीं सर इस तरह नहीं करना। जब आप किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे ना किसी भी वेबसाइट पे, तो नेटवर्क टैब पे जब आप जाएंगे ना तो हेडर्स में आपको यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट बता देगा। स्पाइडर कौन एक्टिवेट करेगा? हम करेंगे सर। स्क्रैपर जो है वो एक्टिवेट। स्क्रैपर कैसे एक्टिवेट होगा? स्क्रैपर कैसे एक्टिवेट होगा वो सर इसमें जो है इंजन पहले अपना इंस्टॉल करेगा, इसमें फ्रेमवर्क जो है इसके लिए लगता है अपना। वो अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल? वो अपने नहीं ब्राउज़र में नहीं, वो आपको VS कोड में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। VS कोड के बगैर आप किसी और आईडीए में काम नहीं कर सकते, वो एफिशिएंट है। और स्क्रैपर का जो है वो 1.51 वाला जो ओल्डर वर्जन है सर वो इस्तेमाल करना है। फिर अगर लेटेस्ट वर्जन तब इस्तेमाल करना है जब आपका पुराना रोबोट और TXT फाइल जो पुरानी स्टडी है आपको पता हो कि हाँ इसने ये इस्तेमाल किया था, फिर आप नया वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो उसने बैन लगाया होगा उसके ऊपर। स्क्रैपर हमारा इंस्टॉल है, मैं जाता हूँ सर्चिंग करता हूँ। यस सर। तो मेरी सर्चिंग जो है वो डाउनलोडिंग करना शुरू कर देता है नहीं, उससे रिलेटेड वो नहीं करेगा डाउनलोडिंग स्टार्ट में। वो डाउनलोडिंग से पहले जाएगा स्केड्यूलर में, ऊपर देखें ऑप्शन है स्केड्यूलर का, वहाँ पे वो चेक करेगा कि ऑलरेडी पहले यूज़र एजेंट्स हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद जाके वो मेमोरी चेक करेगा कि अगर पुराना कोई डेटा अब अगर स्केड्यूलर से निकल भी चुका है या उसका कोई पुराना डेटा उसमें पड़ा तो नहीं है। फिर उसके बाद वो वापस आएगा तो कितने पुराने डाटा को वो कंसीडर करता है और कब कोई डाटा ज़्यादा पुराना हो जाता है डिस्कार्ड करता है? सर वो डिपेंड करता है आपके data.json फाइल पे। अब आपने अगर उसको CSV फाइल में कन्वर्ट कर लिया और आपने सेव कर लिया, यू कैन जस्ट रिमूव इट ताकि बस आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर आप ढूंढते रहेंगे कि मैंने CSV फाइल्स कहाँ कौन सी सेव की थी, या फिर मैं उसको आगे कैसे यूज़ कर सकूँगा, या उसको मैं कैसे प्रेजेंट कर सकूँगा। तो वो साथ साथ आप करें। अगर साथ साथ नहीं करें वही बड़े कोई मसला नहीं, वो डिलीट नहीं होती। अब इसके अंदर देखिए ना, आप वो जो सिमिलैरिटी इंडेक्स देखना था, आपने देखना था कि अगर ज़्यादा सिमिलर है तो उनको फिर ना शो करें। नहीं ज़्यादा सिमिलर तो शो करें, वही तो ढूंढने हैं। यस सर। जो ज़्यादा सिमिलर है वो शो करें, तो जो ज़्यादा सिमिलर नहीं है उनके साथ क्या करेंगे? और वो थ्रेशोल्ड कहाँ पे होगा कि ये सिमिलर है और ये से अब 0.4 सिमिलर है, 0.6 सिमिलर है, कौन सा एक लेवल है जो सिमिलर है? सर वो फिर जो है वहाँ उसमें आपने ये कहा था कि यूज़र जो है वो बताएगा अपनी जो कीवर्ड्स हैं जी, और साथ बताएगा कि कितने आर्टिकल्स हैं, 5 या 10 हैं। मतलब जो आइडिया है इसका वो ये है कि जब आप सर्च करते हैं रिसर्च आर्टिकल्स वो 100,000 का है जी, तो उन सबको फिर चेक करना मुश्किल है। तो हमने कहा कि 2 चीज़ें होंगी, कीवर्ड एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए। तो यूज़र ने जितना नंबर दिया होगा कि यार 5 इसके ऊपर कोई बंदा इसका एक्सटेंशन बता, उसके ऊपर आप ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कर ले, देखें उसके अंदर आप जो है कौन सा ऐसा वैल्यू है, कितने परसेंटेज की सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है किसी यूज़र को या यूज़र्स को ज़्यादा पसंद है। वो सर डिपेंड करता है आप कौन सा आईडी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अगर है तो फिर वो उसके थ्रू फिर होता है। नहीं आप मतलब हर चीज़ तो बनी बनाई नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि खुद भी बनाए। नहीं ये सारा कुछ खुद बनाया है सर, ये ऑलरेडी कभी फिर डिवाइड नहीं हुआ। खुद बनाया तो फिर आप वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
तो सर ये MS लेवल का काम नहीं था सर, ये ऊपर हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन वो फिर आगे लेवल का काम है सर, इंशाल्लाह सर। इसमें फ्यूचर वर्क है। यस, इसमें फिर फ्यूचर वर्क है सर। इसमें फिर आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी स्क्रैपर की अलग सी, जिसमें ये सारी टेक्निक्स अब तक जितनी हुए ना वो इम्प्लीमेंट हो, और फिर उसके साथ जो है फिर वो आप जो है इसको रैपिड मैनर को इंटीग्रेट करो। ठीक हो उसके बाद इसमें और क्या है, स्लाइड में कुछ है कंक्लूजन फीचर वर्क हो तो मैंने Conclusion बता- पे आओ और आगे फिर हम भी कंक्लूजन में आएंगे। ऐसे एक और भी बड़ा मसला है, आपका जो स्टार्ट है ना वो नीचे से शुरू हो रहा है, हाँ, ये नजर आ रहा है आपको तस्वीर में, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है। हाँ, तो वो क्योंकि प्रोसेस अच्छा, ये यहाँ आपने किसी स्टेट ऑफ द आर्ट अदर वर्क के साथ ये आपने कंपैरिजन की है कि आपका जो वर्क है, या ये आपका हाँ सर, नॉवल है, आपसे पहले दुनिया में किसी ने लिखा ये सर सही बताऊँ तो ये किसी ने भी नहीं किया होता तो हम अभी तक ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, 2 साल 6 महीने तो मैंने लगे, वैलिड रीज़न है ना सर, ये हुआ होता तो अभी 2 साल 6 महीने में लगा हम रहता। पर बैठे और इस तरह की वो करे, तो हमें तो गूगल में वो ये रिजल्ट्स हमें देता है, सिमिलरिटी इंडेक्स हमें प्रोड्यूस करके देता है, वो नहीं यूज़ कर रहे, कोई भी मॉडल वो नहीं यूज़ कर रहे। नहीं डॉक्टर साहब आइडिया ये था, जो आइडिया इसका ये था, मैंने ये कहा है कि जैसा आपको मुझे बताया कि आप गूगल स्कॉलर या कोई भी आप सर्च करते हैं आपको आर्टिकल मिलता है, क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जिस सिस्टम में हम उसको कीवर्ड दें और साथ नंबर ऑफ आर्टिकल दें कि ये कीवर्ड है और मुझे 5 टॉप मोस्ट सिमिलर इस कीवर्ड से सिमिलर आर्टिकल लेके आए, तो क्या ऐसा सिस्टम बन सकता है? उसके लिए ये स्टडी थी कि आप जाके इन वेबसाइट्स को हिट करके स्क्रैप करके वहाँ से डेटा उठा के सिमिलरिटी कैलकुलेट करके वो रिजल्ट, तो ये इसने किया कि भी ये सिस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये हर्डल होती हैं, ये एरर्स आते हैं, इन एरर्स को कैसे सॉल्व करना है, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये फ्रेमवर्क जो चीज़ बनाई है इसको सामने रख कर फिर आप सिस्टम बना सकते हैं। अब हमने देखे 504, कवर हो गया। अब हमने 504 का एरर भी बाईपास किया है, वो किसी ने नहीं किया, ये देखें ये इसके अंदर सेक्शन मौजूद है। आपके पूछना है? चलिए अभी एग्जामिनर साहब जी सर। फर्स्ट जी सर, मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने माशाल्लाह ऐसे जो APIs इस्तेमाल किए Yes, sir. टेक्निकली आपने काम किया है, each and everything. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू That's सो good. मच। हम ये API इस्तेमाल करते हैं और ये API बने होते हैं कि आपके लिए काम आसान करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, It's good. थैंक यू सो मच, और जो आपका आइडिया है it's also good. थैंक यू सो ठीक है मच कि सर। आप जो है ना किसी को मतलब आप बता दें कि ये आप कीवर्ड दे दें और आगे जो है आपको आर्टिकल्स नंबर दे दें तो हम आपको मोस्ट रिलेवेंट आर्टिकल्स देंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, दिस इज द बेसिक। that's good. थैंक यू सो मच। फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट मतलब इसके अगर आप एप्लीकेशन देखें ना दे गुड, और आपने जो काम किया है एग्जिस्टिंग टूल्स भी इस्तेमाल यस सर, थैंक यू सो मच सर। हम मेरा जो है ना एक से एक क्वेश्चन है, अगर आप रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करते हैं Yes, ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर का आपको बताऊं, Yes, sir. गूगल स्कॉलर में आप कीवर्ड्स दे दें, यस सर, उसमें आप रिलेवेंस पे क्लिक करें, यस सर, तो वो आप रिलेवेंस के फर्स्ट अगर आपको पहले 10 चाहिए तो पहले 10 रिलेवेंस आर्टिकल आ गए, यस सर, and there's something more advanced कि वो आपके पास डेट वाइज भी देते हैं। बिल्कुल सर, ठीक, इस तरह हमारे पास और भी है, फॉर एग्जांपल मैं हमने इस्तेमाल करते हैं टर्निटिव, यस सर, आपने इस्तेमाल किया होगा शायद, यस सर, टर्निटिव आप टर्निटिव में अपना पेपर दें वो आपको जो है ना सिमिलरिटी दे देता है। वैसे सब मेरा भी एग्जैक्टली यही है जो आप हाँ, अब जो हमारे पास एक्चुअली आगे ना हम जो रिसर्च चाहते हैं, तो रिसर्च हमारे पास दो किस्म की होती है। यस सर, एक होता है कि एक टॉपिक है, थ्योरेटिकली आपने रिसर्च किया, फॉर एग्जांपल कि ये जो है ना अर्थ मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, यस सर, ठीक है। अब कुछ चीज़ों का ये होता है कि आप एक थ्योरी पेश करते हैं या किसी चीज़ को आपने थ्योरम प्रूव किया जाता है। यस सर, अब एक होता है कि आप कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग टूल, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जब आप सिमिलरिटी इंडेक्स मालूम करते हैं तो आप कैसे मालूम कर रहे हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। आपने सिंटैक्स को इस्तेमाल किया, मीनिंग वो अलग चीज़ है, बाद लोग सिमेंटिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिमेंटिक के लिए आपको कॉर्पस डेवलप करना पड़ता है, बिल्कुल सर, अब वो आपने कैसे डेवलप किया है उसके अपने यस सर, ठीक है।
तो इस तरह अगर आप ये होता है कि फिर हम ये करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं सिमुलेटर मालूम करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग मैचिंग करते हैं, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम आपको इंशाल्लाह एल्गोरिथम में पढ़े हो, मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं, हाउ डू यू फाइंड एफिशिएंट वन, ठीक है। तो हम रिसर्च में ये कहते हैं कि एग्जिस्टिंग जो लोगों ने एल्गोरिथम्स या मॉडल बनाए, जैसे सर ने बोला ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, फॉर एग्जांपल किसी ने इस्तेमाल किया है जेनेटिक एल्गोरिथम, यस सर, हम कहते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम में जो आप सिमुलेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यस सर, तो इसमें ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, जी सर, ठीक है। हम कहते हैं यार हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बजाय सपोज जो है इस्तेमाल करते डीप लर्निंग एल्गोरिथम या जेनरल एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, ये एग्जांपल के बिल्कुल सर, जी सर, तो हम इसको प्रूव करते हैं कि जेनरल एल्गोरिथम का मतलब क्या है, बिल्कुल सर, एक एग्जांपल से शो करते हैं कि देखो ये अगर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, दो टेक्स्ट, जेनेटिक एल्गोरिथम आपको ये आउटपुट देगा, बिल्कुल सर, हम अगर जेनरल इस्तेमाल करें ना तो ये आउटपुट आएगा, जी सर, बेहतर आउटपुट है, कहते हैं गुड, गुड, यस सर, समझे ना। बिल्कुल सर, तो और फिर जब उस पे आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सबसे आला रिसर्च होता है, बिल्कुल सर, सबसे आला, और इसी पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप मतलब करते हैं, बिल्कुल, और यूनिवर्सिटी वाले एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो ये दफा पर ये नहीं होता कि आपने करीम का आइडिया दिया कि भाई करीम का एप्लीकेशन लोगों ने बना दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और मार्केटिंग कर दी, गुड। जो रिसर्चर्स होते हैं यूनिवर्सिटी वाले वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि दूसरा आदमी बना ही नहीं सकता, बिल्कुल सर, समझिए, बिल्कुल और सर, हम कोर्स में यही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नेटवर्क मैनेजमेंट का, मैं पता तो ये आपने बोला ना, ये हमारे पास नेटवर्किंग में भी आता है कि नेटवर्किंग में जो आपके पास होते हैं ना हर राउटर का जी सर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, वो लो लेवल कमांड में वो आम एडमिनिस्ट्रेटर को भी समझ नहीं आता, हम उस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके सिंटैक्स सेमांटिक्स सब चीजें लगा के हम एक मीनिंगफुल वे में लेकर आते हैं, बिल्कुल सर, समझ नहीं आया, बिल्कुल सर, ठीक है। तो इस ये एक अच्छा फील्ड है, बिल्कुल सर, आपने जो है ना उस यूजर के लिए आसानी करना, बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो ये आप जब उस पर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उस पर लोग अक्सर जो है ना आप कहते हैं कि ये मैंने प्रोडक्ट बनाया है, बिल्कुल ये सर, एल्गोरिथम किसी के पास नहीं है, बिल्कुल आप लगा दें ये एफिशिएंट है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, फिर वो लोग उस पर आपको जो है ना सपोर्ट करते हैं, फिर वो आपका स्टार्टअप बन जाता है। ये मैं आपको आज़ाद एग्जाम्पल बता सकता हूँ, बिल्कुल सर, हमारे पास एक वेरी फ्लो है, यूनिवर्सिटी ऑफ बनाया ने बनाया है, अब वेरियर ने उसको खरीद लिया, समझ नहीं आया, बिल्कुल सर, तो फिर उसकी मर्जी होती है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो आपकी चीज़ मिस लग रही है वो ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल सिमुलेटेड इंडेक्स के लिए आपने एपीआई इस्तेमाल किया, अब एपीआई बैकएंड में कैसे काम करता है ये जी समझ सर, नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग मैचिंग का कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है, बिल्कुल सर, ठीक है, और उमूमन एपीआई में पुराना वाला इंप्लीमेंट होता है, बिल्कुल सर, समझ नहीं आया, सही है सर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना आपको मतलब इसमें हम जो समझते थे कि आपको ये चीज़ जो गर्ल्स है ये निकालना होता है बिल्कुल एज सर, सच, बिल्कुल सर, ठीक है, जो कि इस चीज़ में थोड़ा सा मिस लग रहा है, शुड बी डन, ओके, ठीक है ना। तो फिर उसके बेस पे आप किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते कर हैं, सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर, तो मैं तो ये करूँगा जी जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सर, सर, आपके सवाल लगातार सर, आप यासिर साहब आपके पहले सवाल बस वो सर ने जो बात की कि वही मेरा भी पॉइंट था, बाकी सर आप अपना पॉइंट कलर करने के करने बाद अपना पॉइंट कंक्लूड करने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस आशा थे और दिस ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपकी थीसिस में भी जल्दी जल्दी जो मुझे नजर आया तो कुछ अलाइनमेंट के इशू है, कुछ ठीक है